फिर एक बार शानी गारमेंट्स ने की है, और उनके बारे में क्या आप ज़्यादा बताऊँ। यहाँ पे नंबर 7 है होलसेल डीलर से, ठीक है। आप अगर यूके में भी हैं, आप यूके में जा रहे हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आप इनके पास बहुत सी हर तरह की वैरायटी मौजूद है ड्रेसेस की। आप उनको कॉल करके उनके फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। तो बस उनसे कंफर्म कर लें आप। चले टॉपिक शुरू करते हैं। Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another topic for life skills A1 phase 1B। जी एक और टॉपिक के साथ आ गया हूँ। लाइफ स्किल्स A1 जो फेज़ 1B है उसका टॉपिक नंबर 31 है आज। द टॉपिक दैट आई हैव कम विद टुडे इज़ व्हाट डज ही और शी डू एट हर और हिज हाउस। हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट डज ही और शी डू एट हर और हिज हाउस, एट होम। ओके, ये है हमारा टॉपिक। सो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि टॉपिक तो होम का है बट वी डू वर्क। देयर आर मैनी पीपल दोज से दैट वी डू जॉब्स, we do not do something at home. So what should we do in this topic if we have got this topic in the test? What to do? हमें क्या करना पड़ेगा? So उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये जो आज की ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये बहुत हेल्प करेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What does he do at home? The first point that I have written on the board that you have to write on the paper is cooking. No matter you are men or woman. Okay, आप औरत हैं या मर्द हैं मैटर नहीं करता। ओके, सो ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी कि आप कहें कि मैं तो मैन हूँ, मैं कुकिंग कैसे जो है ना वो you do not have to think that I am a man and I cannot write this point cooking. I'm going to ask questions to a man and why I do write this point on the paper. No, these things doesn't matter. You still can write this point on your paper. Cooking. Okay. Again, I'm repeating that doesn't matter the other person is a man or woman. Okay. Number 2, washing. Again, same scenario, same scene. दोबारा वही बात है, washing भी आप लिख सकते हैं। ओके। Number 3, gardening. Washing कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। washing मतलब धुलाई शुलाई करना, धोना शोना, ठीक है। और गार्डनिंग मीन्स के आप ये जो बागबानी करते हैं ना, आप घर पे हो छोटे छोटे क्यारियाँ लगाई हुई हैं, उसमें कुछ ना कुछ उगाया होता है, उसको कहते हैं गार्डनिंग। तो साड़ी पंजाबी कहते हैं गोडी करना। ठीक हो गया। ओके, नंबर 4, द फोर्थ पॉइंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, वर्जिश। ओके, देन आई हैव रिटन meal. Meal contains all those meals those you eat at your home, meals of the day like breakfast, lunch and dinner. The next point that came in my mind is watching television. Watching television. So sad news that PSL has gone postponed. बहुत मज़ा आ रहा था। ओके, नंबर 7, रीडिंग। नंबर 8, प्लेइंग, खेलना। रीडिंग, पढ़ना, कोई किताबें पढ़ना, न्यूज़ पढ़ना, ठीक है। ऐसे ये भी देखें, ये भी काम है, राइट। प्लेइंग, कोई गेम खेलना घर पे, कुछ लोग घर पे खेल रहे होते हैं। ओके, अब ज़्यादातर तो अभी इंडोर ही गेम्स हो रही हैं, इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेली जाती हैं। कैरम बोर्ड पे खेलते हैं लोग,
और बहुत सी गेम्स हैं जो कि मोबाइल पे, बहुत सी गेम्स हैं जो आप घर पे बैठ के खेलते हैं, ठीक है। आजकल ये जब से कोविड-19 आया है उसके बाद ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि इंडोर गेम्स ज़्यादा हो गई हैं। देयर आर मोर इंडोर गेम्स आफ्टर COVID-19 came into being. This is what I said. Gossiping. Gossiping means गप-शप लगाना, right? Number 10, cleaning. Cleaning, साफ करना, सफाई करना, okay? In this point many things come like cleaning में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, right? Then number 1, my first question will come to the other person is that I can ask a question about any point out of these. I've told you earlier that these are the points, those you can write on the paper and you can ask 2-3 questions about each point, and you just keep asking those questions to the other person. Again, then I will first of all ask direct question. Do you, or I can say, don't you cook any food at home? Or do you cook any food at home? क्या आप घर पे कोई खाना बनाते हो या नहीं बनाते हो? दोनों सूरतों में, in both the ways you are asking to the other person yes or no. Direct question, okay? Then he will reply, he will definitely reply yes or no, or will say that sometimes. If he says yes, sometimes I cook food. If he says yes, then you have to keep asking next questions like details. Do you think cooking is a good hobby? Do you think cooking is a good hobby? How can you say that it's a good hobby? Then how often do you cook at home? This is it. Move on to washing. Ask a few questions about washing. You can ask a question, which is your most favorite activity at home? He replied or she replied, ask why this is your most favorite activity. What is the reason? Why you say that this is my favorite activity? Washing. Tell me about washing. You do so or not? Different ways ना. All the times when you are jumping on to the next point, आप जब भी नए point की तरफ जा रहे हैं तो एक ही do you से question ना शुरू किया करें. कभी don't you से, कभी आप कह दिया करें now please tell me about washing. Do you do so or not? Okay? ये भी एक तरीका है, ठीक है? So एक तरह के क्वेश्चंस नहीं करने, ये भी याद रखें, ठीक है? मूव करना, जंप करना है दूसरे पॉइंट पे तो डोंट यू कह दें आप. इज वॉशिंग आल्सो अनदर एक्टिविटी दैट यू डू एट होम? ये भी एक और तरीका है, ठीक है? तो कोशिश किया करें ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज किया करें. आगे क्वेश्चन सारे सेम रखें, इन चीज़ों को थोड़ा सा कर सकते हैं तो कर दें. डू यू, डोंट यू, ये तो मस्ट करें. ऑलराइट, देन इफ ही सेज नो, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? वो रीज़न देगा. इन रिप्लाई ही गिव यू रीज़न. ही और शी हैज़ टू गिव यू रीज़न. बट व्हाट्स योर टास्क? योर टास्क इज टू आस्क क्वेश्चंस. सो यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन. आपने एक और क्वेश्चन कर लिया है, आपका टास्क पूरा हो गया है. यू हैव फुलफिल्ड योर टास्क. ओके? इफ ही सेज नो, व्हाई नॉट? एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट अबाउट गार्डनिंग? Is gardening another activity that you do, or is not it? Is it another activity or is not it? ये भी एक तरीका है. Okay? If he says yes, on the point the other person says yes, keep asking those next questions. What do you think? Is it a good activity or not?
how it is a good activity. Okay, how can you say that it's a good activity? बहुत से तरीके हैं, different ways. Move on to exercise. Do you do exercise at home? He'll say, yes, I do. Sometimes I do exercise at home. All right. Don't you think doing exercise in a gym is better? ये भी एक क्वेश्चन है, आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या जिम में एक्सरसाइज करना बेहतर नहीं है? आप क्या सोचते हो? सो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा. अब याद रखें, वो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन यू लिसन द वर्ड एक्टिविटीज एट होम. वर्ड्स कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं. वर्ड्स, एक्टिविटीज एट होम. सो इस टॉपिक में आप ये 3 वर्ड्स उस क्वेश्चन में डाल सकते हैं. ये मैं साथ साथ बता दूं आपको. एक्सरसाइज में फिर आप देखें, जब भी एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, लाइक आपने कुकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप बीच में पूछें विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट डिश टू कुक एट होम, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट थिंग टू वॉश, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट प्लांट टू ग्रो. गार्डनिंग में ये पूछें, ठीक है. एक्सरसाइज में पूछें विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज टू डू एट होम. वाई, साथ वाई पूछते जाएं. मील, अब मील की तरफ आप इस तरह आ जाएं, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट मील टू ईट एट होम. ओके, अब इसका पहला क्वेश्चन ही आप यही करें. सो ये 10 पॉइंट्स हैं. यू कैन आस्क hundreds of questions if you keep asking all the questions about all the topics. आप एक टॉपिक पे सैकड़ों सवाल कर सकते हैं. मेरे ख्याल में ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीकाकार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यही जो पीछे मैंने क्वेश्चंस बताए ना, आगे भी आपने वही देखें. अब एक्सरसाइज का फ़ायदा भी पूछ लें बीच में. कैन यू प्लीज़ टेल मी वन बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज? कुकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग. ओके, ये भी पूछें. अब वॉचिंग टीवी, everyone almost everyone watches TV at home. What about you? Okay, this is another way. Still you are asking a question. If you say at my home all the family members watch television, what about you? In this way you are asking a question as well, remember. Okay, so if he says yes, of course I watch television, what do you watch most and who do you watch with? Okay, same like this you can ask who do you cook with, wash with, do gardening with, take exercise with, eat meal with, watch TV with, read books with. On the point he or she says yes I do so, वहाँ पे पकड़ लें उसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पॉइंट के बारे में आप 5-6 सवाल करें और फिर नेक्स्ट किसी पॉइंट पे मूव करें. इन दिस वे you have kept asking questions, you have fulfilled your task, your required task. आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है. ओके, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं. The other person, if he is saying on different points that no, like such as he says no I do not do gardening at home, no worries. If he said I do not do, ask him or her the next question. उससे फिर भी next question पूछो, why not? Okay, why not you do gardening at home? आपने question कर लिया ना. So फिर next point पे चले जाओ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते जाओ. किसी पे तो यस कहेगा, जिस पे यस कहेगा आप तो क्वेश्चन करते आ रहे हो, जिस पे यस कहेगा उस पे वो 5-6 सवाल जो हैं वो सारे कर दे. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे. होप सो you have learned a lot from today's video as well. Thank you very much for all your support. Congratulations to the students, those have got passed in their life skills A1 test.
and I know they have received and collected their results today, and all of those called me. Just Sardar ji didn't call me. Sardar ji, we gave you precious time, na? So you should have called us, a single call. Okay, we need what? Appreciation. So if you are watching this video, I think you would call me. Okay, all the other students, those have called me and texted me, thanks a lot. It was all your effort. We are doing what we are just helping you people however we can. हम जैसे भी कर सकते हैं, हम जो भी टूटी फूटी हेल्प है हमारे पास, जो देखें कहते हैं मदद करने के लिए, टू हेल्प समवन, it isn't that you must have, if you have money and you can help other people. No, it isn't important. If you even do not have a penny in your pocket, still you can help the other people. So हम वही काम कर रहे हैं, हमारे पास चलें कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है हम आपकी हेल्प में लेके आ रहे हैं और वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिल रही है तो हमें उससे खुशी हो रही है, बाकी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ओके, सी यू अगेन विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह सूनर। There is another sorry, I forgot to inform you that there is another series that we have started. I have requested to Mr. Salim Khanzada that please start another series in which you teach them with the basics of English. In that series he will come with the tenses as well as all the other things, those come in basic English. So if you are a spoken English learner or life skills A1, B1, or even if you are a person who wants to appear in IELTS test, your basics should be very strong. So you have to watch those videos as well. I will play that card at the end of video. See you soon, inshallah ta'ala. We'll come back with another interesting topic. Till then, Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.